हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 माय इंग्लिश बुक 7 का 3.3 न्यूज एनालिसिस, उसके मार्जिनल क्वेश्चंस एंड इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूज एनालिसिस। तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ के इसके ऊपर कोई बेस्ट क्वेश्चंस पूछे तो क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चंस अपना। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशू, कैंडिडेट्स एंड इन्विजिलेटर्स? आंसर, इशू मतलब पब्लिश। सेकेंड, कैंडिडेट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स। और थ्री, इन्विजिलेटर में टीचर्स गार्डिंग इन द एग्जाम। सेकेंड, हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट? आंसर, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु। थर्ड है, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप ऑफ 4 और 5। फर्स्ट है, why is clothes, footwear, shoes, socks not allowed in the examination hall? Answer, to stop candidates from bringing cheats in the examination hall. Second A, B, why has the institute not allowed electronic gadget in the hall? Answer, to stop candidates from communicating with outside. Third, what other measures can be taken to prevent copy? Answer, installing CCTV cameras, strict supervision and searching clothes and compass boxes, etc. फोर्थ है, व्हाई इज दिस न्यूज पब्लिश इन न्यूज़पेपर? अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आंसर, टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड वार कैंडिडेट्स। सेकंड है, तो आपको सेकंड बेस पे भी कोई क्वेश्चंस पूछे गए तो देखते हो क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट है, गेस द मीनिंग ऑफ द मोस्ट हाईली पेड रिवेल्ड साइन फिल्म्स। Answer. First, most highly paid, the actor, actresses who get the highest amount for acting in every film. Second, revealed मतलब made something known to somebody. और third, sign film, sign a legal agreement with the producer for acting in the film. Second है, what words are used for the following in the news items? Film industry, उसके लिए बॉलीवुड। B. Something on which a lot of money is spent. Answer, big budget movie. Third question है, guess why Ants is a big budget movie. Answer, Ant is a big budget movie because the famous actor says Ritika, who has starred in it, is believed to the most highly paid star in Bollywood. Expenses on technology from foreign countries and attractive, fabulous location must have cost the producer heavily. Fourth, can you think of other reason for Ritika's decision? Answer, she must be tired of acting for a long time. She might be choosing some different careers, business. She must have thought retiring when she was at the top. She might be getting married. Fifth, what will be the Ritika reaction to this news? यहाँ पर आपको आंसर दिया हो, यहाँ से आप कॉपी कर कर डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेकंड न्यूज आपको दी हुई है, मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। तो उसके ऊपर बेस क्वेश्चन पूछे आपको क्या? गेस द मीनिंग ऑफ द मैनकाइंड। आंसर है, मैनकाइंड ऑल द ह्यूमंस और द ह्यूमंस रेस। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, which words or phrase in the news refer to the earth? Answer, word and planet are the word used for the earth in the news. Third है, which of the following problems do you believe is the most serious? A है climatic change, B overpopulation, C epidemic disease. Answer, climatic change. फोर्थ है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो आपको ये खुद से करना है, ठीक है? 5 है, प्रोफेसर हॉकिंग रोड
About the problems in the Guardian. Why it is given a news in other papers? Answer. It is given in the news to make people aware in the dangerous situation and make them understand the impending calamities. The news will inspire the scientists to find remedies to protect the earth. नेक्स्ट है 2 minutes और ओरल वर्क क्या है टेल मी मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स जैसे कि न्यूज टीवी रेडियो और मोबाइल तो उसका आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेकेंड है एक्टिविटी उसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट गो थ्रू अ फ्यू स्पेसिमेन ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर you will see that each page usually carries only a certain types of news. The types are decided according to region, city, state, nation, world, etc. and also according to the nature of the news, political, cultural, science, related, financial, sport, related, etc. Read all the news items given on page 72 to 72 and decide the types to which each belongs. तो आंसर क्या है सिटी न्यूज एजुकेशनल रिलेटेड टू राइजिंग कॉपीज केसेस सेकेंड है सिटी न्यूज कल्चरल रिलेटिंग टू फिल्म इंडस्ट्री अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थर्ड है वर्ल्ड न्यूज और फोर्थ है लोकल न्यूज यहाँ पर आपको उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सेकेंड है व्हाट अदर आइटम्स डू यू फाइंड इन अ न्यूज़पेपर बिसाइड्स न्यूज आंसर क्या है आर्टिकल एडवर्टाइजमेंट स्टोरीज सर्वेज रिव्यूज ऑफ बुक्स प्लेस फिल्म्स पीपल्स ग्रेवेंसेस डिबेट्स कोर्ट केसेस एक्सेट्रा नेक्स्ट है क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स जैसे कि स्टाफ रिपोर्ट टू काउटिंग ठीक है तो इसके ऊपर आपको कोई बेस्ट क्वेश्चंस पूछे वो हम देखते हैं तो फर्स्ट है गेस द मीनिंग ऑफ फ्लोक्स एंड द फॉलोअर्स आंसर है फ्लोक्स टू गैदर टुगेदर इन द लार्ज नंबर फॉलोअर्स कौन है पर्सन हु सपोर्ट एंड एडमायर अ पर्टिकुलर पर्सन सपोर्टर्स सेकेंड है व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग आंसर बिकॉज द रिपोर्टर हिमसेल्फ इज डाउटफुल about the contents of the news. He has given the news but left it to the people to decide whether to believe it or not, so there is a question mark in the heading. Question 3 है which part of the news is reliable? Which part may not be reliable? How do we learn that? Answer the last four lines of the news items are reliable. The part where Miri Baba and his followers speak is not reliable. We learn that from the words special and bless. बाकी का आंसर यहाँ पर आप कॉपी कर कर लिख सकते हैं फोर्थ है विल मेरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स लाइक द न्यूज आंसर दे विल नॉट लाइक द न्यूज बिकॉज the news could raise questions and doubts among the people. They might protest and oppose this news. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है What should you do? What should you do when you fall ill? यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर कर लिख सकते हैं सिक्स है इमेजिन हाउ दिस न्यूज आइटम्स हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ द मेरी बाबा's powder cannot cure disease. Write the story about it in short in your mother tongue. तो उसका आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है जैसे कि काही सुरक्षित तरुणांनी मेरी बाबाच्या मठापाशी जमलेल्या सर्व रुग्णांना जमा केले मेरी बाबाला मठाबाहेर आणले आणि ती पावडर म्हणजे औषध नसून साधी बाजरीचे पीठ आहे हे सर्व सर्वांक्ष समक्ष मेरी बाबाला कबूल करायला लावले मेरी बाबाने आपण पैसे कमवण्यासाठी लोकांना फसवले हे कबूल केले नेक्स्ट है अपना स्टैंडर्ड 7 माई इंग्लिश बुक 7 का 3.3 न्यूज एनालिसिस इंग्लिश वर्कशॉप उसके क्वेश्चंस एंड आंसर फर्स्ट है राइट योर ओन इम्प्रेशन अबाउट द न्यूज आइटम्स गिवन A, B, C and D.
in the table below. न्यूज आइटम कौन कौन से हैं? गुड न्यूज, बैड न्यूज, रिलायबल और अनरिलायबल, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग और अदर्स। तो आपको कौन कौन से हैं दिए हुए, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर लिख सकते हैं। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.